Welcome back to my YouTube channel, Medical Classes by Dr. Srinidhi Kumar Acharya. Don't forget to subscribe my channel and also please give your valuable comments. Now, in the last class, we have seen some of the basics of reading of the chest X-ray. And we have seen what are the points to be understood. A, B, C, D, the alphabet we have seen. A stand for airway, B for bones, etc. So that was an introductory class. Okay, to read the chest X-ray. So today onwards we will go systematically understanding how to read the chest X-rays. Now, reading the chest X-ray is easy once you know the underlying anatomy of the lung. Now, when you see the X-ray plate, hardly we will see some of the white patches and some of the black patches. That's all what we are seeing. White patches may be because of the bones and some other soft tissues, and the black portion which we are seeing is nothing but the air-filled cavities. But this much of information is not sufficient to read the chest X-ray. To read the chest X-ray accurately, what is required is the knowledge of underlying anatomy. So once you know that, then you can interpret it very easily. Now you look at this picture. So this is a picture which shows the chest X-ray, and this is a middle aspect. Okay, see, you can see this particular portion. This is the cardiac shadow. Okay, and this is the hilar portion on the right side, and this is the hilar portion in the left side. Now, starting from this point, from up to down, we should know what are the underlying structures which are present there, and accordingly we have to interpret, yes, this particular structure is get affected and this may be the possibility. So basic thing is we need to understand the anatomy. So look at this anatomy. First, you just have a glance on these numbers. See, in the chest X-ray, when you see the number 1, this particular area, this is on the right side, okay, the uppermost area here, and if you see, this is nothing but the vertebral bodies. Okay, these are the vertebral bodies which are present in the lower side. Similarly, vertebral bodies are also present in the upper side also. Okay, and this is actually the portion of the trachea. Okay, so this is this is the midline. Now, uppermost portion we have got right brachiocephalic vein and the artery. So this particular portion on the right side and as well as left side. The left side there is some difference. In the right side, the uppermost area. Okay, if this is the sternal portion. Okay, underneath bone is a sternum. Now this is the area where right brachiocephalic vein and as well as artery is present. Number 1. The numbering has been given. Come to the number 2 area. Just below this right brachiocephalic vein and as well as artery, number 2, which is as noted here, that is right paratracheal line. These lines. See, this is trachea actually. On the both sides of this trachea, we have got the lines, and these lines are called as right and as well as left paratracheal lines. In the right side is right paratracheal, in the left side is left paratracheal. Para means sides, on the sides of the trachea. Number 3, this portion, number 3, so this indicate the superior vena cava. Number 3 indicates the superior vena cava. So here this is right brachiocephalic vein and artery, this is superior vena cava. The number 4 which is mentioned here, so this area corresponds to azygous vein. There is a vein, I think you may be knowing that, azygous vein. Okay, that is present on the right side and left side both. Azygous and hemiazygous veins, 2 veins are there. Okay, this is the area where actually azygous vein is present. So this area, number 5, this area 5, so this corresponds to ascending aorta. From the right, that means if this is the ventricular portion, from the ventricles, the aorta take a right side shift and then it again go back to the left side. We know that. So now this 5th area number 5 over here, so this corresponds to ascending aorta. So if you want to see some of the problems related to ascending aorta, or if in the number 5, if you have got any problems
So then it is called as ascending aorta problems we have to see. Another is azygoesophageal interface, that is number 6. See, this area, azygoesophageal interface. Okay, so this area is correspond for that. Number 7, that is nothing but right atrium. So now this is a right atrium. Now we come to the cardiac area. Okay, so this is nothing but right atrium, number 7. Okay, now this area present over here, this area, so this corresponds to cardiophrenic pad of the fat. This is nothing but a fat, and this is a cardiophrenic, this is actually cardiophrenic angle. Cardiophrenic angle is number 8. So this area, and this is a fat which is present there. So this is understanding the structures in the right side. Okay, so just you have to remember this is in order from the uppermost area. In the uppermost area there is right brachiocephalic, just below it right paratracheal lines are there. Just below it we have got SVC, superior vena cava. Just below that 4 number area we have got the azygous vein. Then comes the ascending aorta, then comes azygoesophageal junction or interface, and this is number 7 is right atrium, and just below it is a cardiophrenic angle. Cardiophrenic angle. So this is how you have to remember this. Now we will go to the next side, number 9, on the left side, number 9. So that we'll see here. See, number 9 on the left side, left subclavian artery, just like it's a brachiocephalic vein is there. Same area in the left side we have got a left subclavian artery. Okay, now this is the most important area, number 10 here. So this area just like a curve is there, a small curve is there, and this corresponds to aortic knuckle, arch of aorta. This is the area where the arch of aorta crosses. Okay, so this area is a aortic knuckle. And middle pulmonary artery, area number 11, this corresponds to middle pulmonary artery. This is aortic knuckle, mid pulmonary artery. Because if this is aorta, underneath the aorta there is passing of a pulmonary trunk. You may be knowing that. Okay, pulmonary trunk उसका नीचे से आता है ना, तो वहाँ पे जाके वो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में. So this is middle pulmonary artery. Okay, now number 12, just below that. Okay, this is nothing but left atrial appendage. एट्रिया का एक appendage रहता है लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में नहीं रहता, वो लेफ्ट एट्रियम में रहता है. सो दैट इज appendage portion now. Okay, this is appendage portion. Now left paraspinal interface 13. So see, look at over here. So this particular area in the chest, okay, chest x-ray. So this area यहाँ पे midline के पास. So ये जो area 13, area number 13, left paraspinal, spinal का पैरा में. ओके, स्पाइनल का पैरा में, जैसा वहाँ पे पैराट्रेकियल था, जैसा यहाँ पे नीचे पैरास्पाइनल इंटरफेस. ओके, नाउ एरिया नंबर 14, सी दिस पोर्शन, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड एरिया नंबर 15 इज पैरा आयोटिक इंटरफेस. दिस इज आयोटिक पैरा, यहाँ पे पैरास्पाइनल इंटरफेस है. 15 इज पैरा आयोटिक इंटरफेस. सो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल 14 जो दिया है यहाँ पे. This is 14 is left ventricle, and right ventricle will be present over here. ठीक है, right ventricle will be present in this side. ठीक है, so this is the area where we have got right atrium. ठीक है, और यहाँ पे आएगा right ventricle, और उसके बाद ये आएगा left ventricle. So this is in general understanding the different areas of a chest. Anatomy, pure anatomy. Okay, हमने अभी lateral area में क्या क्या वो सब देखे नहीं है, हमने सिर्फ मिड लाइन से लिया है. मिड लाइन का दोनों आसपास क्या क्या एरिया आता है हमने उसको वी हैव सीन. यस, नाउ दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू नाउ कनेक्ट दीज टू एरियाज. ओके, नाउ दिस इज अ रियल नॉर्मल एक्सरे. ओके, दिस इज अ रियल नॉर्मल एक्सरे. So now you try to identify whatever the points that we have covered. Okay, so area number 1, so this is area number 1. Okay, on the right side, area number 1, it is almost all present over here. Okay, so this particular area. Okay, now this area is the area where there is right brachiocephalic vein and as well as artery is present. Okay, right. Second is
right and left paratracheal lines. Now this is a trachea. Okay, if you see, okay, the cartilages are there. This is a trachea. Trachea is seen here. Okay, so this is trachea. Now on the sides of this trachea we have got a right as well as left paratracheal lines. See, this is trachea which is coming over here. When it is come over here, it divides into right side and left. Okay, if you see the black marks over here, so this is a right bronchus and this is a left bronchus. Right bronchus थोड़ा straight है और short है. Left bronchus थोड़ा just follow the black mark over here. ठीक है, जो black marks है. ठीक है, so left side थोड़ा नीचे रहता है और थोड़ा wide रहता है और थोड़ा लंबा भी रहता है. But ये straight रहता है और short रहता है. Anyway, so this is area number 2 is a paratracheal lines. Okay, now what is the area number 3? Can anybody say? Superior vena cava. Superior vena cava. So now this is, if this is यहाँ पे होगा, so superior vena cava. So this particular area, okay. So superior vena cava is just before the division of the aorta. Sorry, trachea. Trachea का जो ये ट्रेके यहाँ पे डिवाइड हो गया, राइट साइड में जा रहा है और ये यहाँ से लेफ्ट साइड में जा रहा है. तो यहाँ पे वो दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके, वो दिस पर्टिकुलर एरिया. सो दिस इज सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवल एरिया. ओके, इफ यू सी द सरफेस एनाटॉमी ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, सी दिस इज रिब नंबर 2, 3, ठीक है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास आ जाएगा. Okay, so this is superior vena cava. Now area number 4 corresponds to azygous vein, isn't it? सही है? Yes, sir. So azygous vein is just present just below it. So maybe this particular area. ठीक है? So यहाँ से आपका ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया में है यहाँ पे azygous vein है. Okay, area number 5 is Ascending aorta. see this is the portion. ठीक है? So this is the portion where actually ascending aorta is present. क्योंकि ये है ना, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो यहाँ से ऐसे ही जाएगा. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो यहाँ से जो अयोटा जो निकलेगा वो ऐसे ही जाएगा. सो दिस, ये जो स्ट्रेट यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है. ठीक है, सो दिस एरिया मोस्टली करस्पॉन्ड्स टू द ascending aorta. Just below the ascending aorta there is an interface, esophageal azygous interface है. And after the interface, if you look into this particular area, ये जो dome shape है थोड़ा बहुत है ना, so this is nothing but right atrium. This is nothing but right atrium. Area number 6 is what? Area number 6 तो हो गया. Area number 7 is right atrium. And area number 8 this जो है cardiophrenic angle. So this is cardia coming over here. This is a phrenic. Phrenic refers to diaphragm. ठीक है, diaphragm, और ये ऐसे आ रहा है, जो ये डोम शेप है यहाँ से जो आ रहा है, this is diaphragm. यहाँ से कार्डिया आ रहा है. So दोनों मिलके यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, so that angle is called as cardiophrenic angle. Okay, this angle is more than 90 degree or less than 90 degree normally. Cardiophrenic angle obtuse है, abuse है. obtuse मतलब क्या है? more than 90 है, less than 90 है. more than 90 है ना? Yes sir, obtuse मतलब more than 90. So this is the specialty. This is more than 90 obtuse angle है, and this is called as cardiophrenic angle. Now you have to understand this. जब भी whenever you are looking at the X-rays, ये आपका सामने आ जाना चाहिए पिक्चर्स. सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सबसे पहले यहाँ पे हमारा ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और वेन है, और उसका नीचे जो है ये पैराट्रैकियल लाइन आ जाएगा, और उसका नीचे यहाँ पे आएगा सुपीरियर वेना केवा. उसके बाद एजाइगस वेन, एजाइगस वेन के बाद वी हैव गॉट असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा के बाद वी हैव esophageal azygous interface. उसके बाद दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल. सो दिस ऑल जो मीडियल साइड में जो स्ट्रक्चर्स है हमने उसको देख लिया. नाउ कम टू द लेफ्ट साइड. इन द लेफ्ट साइड एरिया नंबर 9, ओके, uppermost area number 9. So here we will have subclavian artery, left subclavian artery. So this may be the first rib. This is the first rib. ठीक है, this is the first rib. In that area यहाँ पे जो है subclavian artery. And area number 10,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. व्हाट इज दैट? आयोटिक नकल. आयोटिक नकल, जो आयोटा आपने यहाँ से जो निकला और ऐसे आ गया और वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. दिस पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो कर्व है ना, ये जो दिखाई पड़ रहा है, सो दिस एरिया, सो दिस एक्चुअली रेफर्स टू aortic knuckle. So identification of the aortic knuckle is very important. So ये जो curve वाला area है, this is aortic knuckle. And just below the aortic knuckle, area number 11, what is that? MP. Huh? NPA. MP. क्या NPA? MPA, mid pulmonary artery. Yes, mid pulmonary artery. Okay. After that, mid pulmonary artery, देखो आप नीचे देखेंगे तो बहुत कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो आयोटा का नीचे रहता है, आयोटिक नकल का नीचे रहता है, तो उसका विजुअलाइजेशन इतना अच्छा एक्चुअली नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द एरिया. नाउ दिस इज द एरिया ऑफ आयोटिक नकल, वेरी क्लियर. ठीक है, यहाँ पे ये एरिया है. ठीक है, एरिया नंबर 10. एंड देन कम्स, यहाँ पे आपको मिलेगा मिड पल्मोनरी आर्टरी. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज एरिया नंबर 12? Left atrial appendage. यस, दिस, ये जो है यहाँ से आ गया और ये आपको जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, ये दिस एरिया, दिस इज लेफ्ट एट्रियम का अपेंडेज है. ओके, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज. एंड बिलो दैट दिस एरिया इज एरिया नंबर 13. इफ यू सी 13 इज, यहाँ पे आएगा स्पाइनल नोस, पैरास्पाइनल नोस. तो स्पाइनल मतलब मिड लाइन में देखना है आपको. सो ये हो गया आपका ट्रेकिया के पीछे वर्टेब्रा है. ओके, सो नाउ कैन यू डिफरेंशिएट, दिस इज ट्रेकिया. एक्चुअली ट्रेकिया के पीछे वर्टेब्रा है और नीचे आप यहाँ से ट्रेकिया, देखो ट्रेकिया यहाँ तक आ गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया और उसके बाद ट्रेकिया नहीं है. तो उसके बाद जो है पीछे का वर्टेब्रा आपको देखना शुरू हो गया. सी, दिस इज वर्टेब्रल गैप, दिस इज वर्टेब्रल बॉडी. इसका ऊपर जो है आपको वर्टेब्रा इतना अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहा था, बिकॉज देयर इज ट्रेकिया यहाँ पे, तो इसकी वजह से वो दिखाई नहीं पड़ रहा था. बट नाउ द वर्टेब्रास आर visible. Now once you see the vertebras, now see the side lines of the vertebra. vertebra का जो side lines क्या है? See, ये एक साइड है, एक साइड है, और इसका साइड में जो लाइन है, this the line is called as a paraspinal lines. Okay, paraspinal और vertebral paraspinal lines. Okay, so यहाँ तक आ गए हम. So ये आ गया आपका appendage, ये जो डोम शेप है यहाँ पे, this is appendage. यहाँ पे आ गया paraspinal lines. And this is the area. What is this area? इतना जो एरिया है, starting from this. So this is left ventricle. Okay, so this is the area of a left ventricle. So area number 15 is the last. यहाँ पे वापस जो लाइन्स आएगा, कौन सा लाइन है? Para-aortic interface. लास्ट लाइन में कौन सा है? 15 Para-aortic interface. interface. Okay, so these are the two important pictures that you have to remember. राइट साइड में, मिडल साइड्स में क्या क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, ये आपका टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए. जब भी एक्सरे देखेंगे आप इसी को देखेंगे, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसका मतलब है उस स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है. ओके, सो इफ आई से दिस पर्टिकुलर लाइन, यहाँ पे ये लाइन बहुत ज़्यादा ऐसा आ चुका है, बहुत ज़्यादा ऐसा आ चुका है. सो देन आई कैन से, सो दिस इज नथिंग बट एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट. सो ये जो लाइन है, इस लाइन से इस साइड में है तो वो एनलार्जमेंट है. ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक थिंग जो है, इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. नाउ दिस इज ओनली, वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द एक्सरे, वी हैव ओनली सीन द मिडल बॉर्डर, दैट्स ऑल. हमने सिर्फ मिडल बॉर्डर में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो हमने देखा. सी, दिस इज क्लैविकल, वेरी क्लियरली विजिबल, एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस, एंड देयर इज सम पोर्शन ऑफ द स्कैपुला इज ऑल्सो विजिबल. पीछे से स्कैपुला ऑन द बोथ साइड्स इफ यू सी, दिस इज द ह्यूमरस. ओके, दिस इज आपका क्लैविकल है, एंड दिस इज अ ह्यूमरस, एंड पीछे जो दिखाई पड़ता है दैट इज स्कैपुला, एंड दिस इज द मिड लाइन. वी हैव गॉट द ट्रेकिया का पीछे वी हैव गॉट द वर्टेब्रल बॉडीज. ओके, दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल व्हेन यू गो डाउन. सो दिस इज वन पार्ट. सो नाउ you just look at this particular x-ray. Okay, now the same x-ray हमने थोड़ा उसको और अच्छे से बना दिया, so that it is very clearly visible for you all. Okay, now the same, see the trachea is coming over in the midline जो अब तक हमने देखा. See what is this? paratracheal lines. ये जो lines है यहाँ पे वो paratracheal lines है. Okay, now
दिस इज, सी दिस इज फर्स्ट रिब, यहाँ से जो आ रहा है दिस इज फर्स्ट रिब। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें दिख रहा था दिस इज सुपीरियर वेना केवा। सर दिख रहा है सुपीरियर वेना केवा। ओके, सो इफ यू कंपेयर ओवर हियर दिस इज द पोर्शन सुपीरियर वेना केवा। Slides are visible? Yes, sir. Yes, but cursor not seen. ठीक है, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। देन दिस कम्स अपर लोब ऑफ द पल्मोनरी वेजल्स, अपर लोब ऑफ द pulmonary, upper lobe and pulmonary vessels. Okay, now this is carina. What is carina? Carina is the area where actually the trachea will divide into right and left bronchus. ठीक है, सो वो जो एरिया है ये है, यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चला गया। ओके, नाउ पहले हम राइट साइड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे वो देखेंगे। सो एवरीबडी नोस दिस इज क्लेविकल। ओके, सो ये जो है क्लेविकल है, यहाँ पे आके ज्वाइन होता है मिडल एंड ऑफ द क्लेविकल। सो दिस इज लेफ्ट साइड क्लेविकल coming over here, and this is a sternoclavicular joint, right and left side, and this is coming over here, that is trachea. इसका साइड में जो है paratracheal lines, and this is superior vena cava. Just below the superior vena cava we know that there is a, क्या है superior vena cava का नीचे azygous vein. Now we shall see whether azygous vein is present. इसमें denote नहीं किया, it will be present some over here. Okay, azygous vein. From the later from the azygous vein होने के बाद this is the portion of aorta. Okay, so this is the portion of the aorta जो straight line यहाँ पे दिखता है, this is the aorta, and aorta के बाद जो dome आता है this is right atrium, right atrium. Now left right ventricle है ना, ये यहाँ पे दिखता नहीं है। ओके, राइट वेंट्रिकल इतना एक्सपोज नहीं होता है तो अंदर रहता है। एक्चुअली दिस पोर्शन इज एक्चुअली राइट एट्रियम, ये सॉरी राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो पोर्शन है ना दिस इज राइट वेंट्रिकल। ओके, नाउ एंड दिस इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल, राइट साइड कार्डियोफ्रेनिक एंगल। नाउ इफ यू सी दिस इज राइट डायाफ्राम, हेमी डायाफ्राम या राइट डायाफ्राम, हेमी इसलिए बोलते हैं आधा इधर है आधा इधर है इसलिए, सो राइट हेमी डायाफ्राम, सो दिस इज लेफ्ट हेमी डायाफ्राम। Okay, so now one more important thing that you have to identify is first rib. फर्स्ट रिब आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। देखो अब रिब का काउंटिंग इस तरीके से नहीं करना है 1 2 3 4 5 6 7, ये गलत है। रिब्स का देखो ये फर्स्ट रिब है, ये फर्स्ट रिब ऐसा आके यहाँ पे ज्वाइन होता है, ठीक है, फर्स्ट रिब, एंड दिस इज सेकेंड रिब, दिस इज थर्ड रिब, क्योंकि रिब्स आर ऑब्लिकली प्लेस्ड, रिब्स आर नॉट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, ठीक है। सो यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द काउंटिंग द रिब्स। ओके, सी दिस इज द पोस्टीरियर रिब एंड दिस इज द एंटीरियर रिब, मतलब जो एंटीरियर पोर्शन जो होता है चेस्ट में वो रिब्स देखो ऐसा आता है, ठीक है, ये वाला नहीं है। एक्चुअली दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन है, दिस इज पोस्टीरियर रिब। इसका जो एंटीरियर पोर्शन है ना ये ऐसे आके यहाँ पे आएगा, ये एंटीरियर पोर्शन है। ओके, सो लाइक दिस, this is ribs you have to, and this portion is scapula, this is a portion of the scapula. Okay, this is inferior angle of the scapula, and we know that this is carotid process, and this is okay. So now this is on the right side. Are you clear? At least right side में जो structure है medial part में जो आता है वो आप clear हो गए? Yes, sir. Okay, this is the basic thing. ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಹಚ್ಕೊಂಡೆ. 50% ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, हाल ಕೊಡಿ। सो नाउ यू जस्ट लुक इनटू द लेफ्ट साइड, जो हमने देखा था लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो। सुपीरियर मोस्ट पोर्शन वी विल हैव दिस सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी विच इज नॉट मेंशन्ड हियर, सो इट इज प्रेजेंट समवेयर ओवर द हियर ओनली, ठीक है। इसी पोर्शन में ये ट्रांसफर प्रोसेस है फर्स्ट रिब का। सो दिस इज अ फर्स्ट रिब, ट्रांसफर प्रोसेस है फर्स्ट वर्टेब्रा का। सो दिस इज नाउ फर्स्ट रिब, ओके, हियर इट्स अ फर्स्ट रिब, हियर इट इज अ फर्स्ट रिब। सो यहीं पे सबक्लेवियन आर्टरी, just below the subclavian artery, what is the structure is there? Aortic knuckle. Aortic knuckle, very important. See, this is the portion, aortic knuckle वाला portion ये है, ठीक है। यहाँ पे subclavian artery आ गया और उसके बाद ये sternoclavicular joint आ गया, और joint के just बाद aortic knuckle, aortic arch कहाँ पे है वो पता है आपको? वो sternal angle का एकदम उसी लेवल पे रहता है,
ठीक है. So now this is aortic knuckle. See, this is a bend, this particular curve which is seen, this is aortic knuckle. Now this is pulmonary artery. MPV लिखा था, मैंने गलत बताया, MPA लिखा था. It is not medial pulmonary artery, this is main pulmonary artery. Okay, it's a mistake. It's not medial pulmonary artery. कहाँ पे होता है, नहीं है ना. So main pulmonary artery. Okay, main pulmonary artery. So this is aortic knuckle. Aortic knuckle का नीचे this portion is main pulmonary artery. ओके. नेक्स्ट कम्स लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज. इसके बाद जो ये स्लोप शुरू हो गया, व्हेन द स्लोप इज स्टार्टेड, दिस इज अ पोर्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज लेफ्ट कॉस्टोफ्रेनिक एंगल. दिस इज लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल, सॉरी, दिस इज लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल. एंड हियर देयर विल बी अ bubble that is called as gastric bubble, indicating the stomach gas. Okay, so now see, this is the posterior rib, this is the anterior rib. तो रिब्स का काउंटिंग कैसे होता है? ऐसे होगा, एक, ऐसा नहीं है 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता है. 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, क्योंकि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये पोस्टीरियर रिब है, ये एंटीरियर रिब है. देखो ये 1, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो गया फर्स्ट रिब, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है और ये इसका एंटीरियर पोर्शन है. ठीक है, और यहाँ से ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है और ये इसका एंटीरियर पोर्शन है. 3 4 5. ठीक है, इस तरीके से काउंट. ये देखो, ये एंटीरियर रिब है, ये पोस्टीरियर रिब है ना. ये मिस्टेक यूजुअली हम करते हैं कि जो सामने से जो इसको, ये जो दिखता है इसको हम काउंट कर लेते हैं. एक्चुअली इसे रिब का पोस्टीरियर पोर्शन है. सो हमें हमेशा काउंट करना है. इंटरकोस्टल स्पेस को देखेंगे तो पता चलेगा. ये वाला एक इंटरकोस्टल स्पेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, क्योंकि जहाँ पे ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है. ठीक है, स्ट्रेट नहीं, बिकॉज रिब्स आर ऑब्लिकली faceable. So this is about the midline structures. Okay, so we should know the minimum midline structures. Any doubt in this? No, sir. So I hope this is very clear now. Now we will go for the next structure. Okay, so for the same better understanding, now we have got another important picture. So this will make you understand और अच्छे से आपको पता चलेगा. See, this is the area of the trachea. ओके, ट्रेकिया. सो ट्रेकिया सेंट्रली है या नहीं हमें देखना है. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेकिया एंड दिस इज द एरिया ऑफ क्लैविकल. ओके, दिस इज क्लैविकल सीन ओवर हियर. नाउ दिस इज हाउ वी आर काउंटिंग द रिब्स. ओके, देखो, एक दूसरा रिब है, तीसरा, 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो नाउ दिस इज राइट डायफ्राम. क्लियर. नाउ कम टू दिस एरिया. दिस इज carina. Carina is the area where the trachea divides into right and left, and this is aortic knuckle. See, curve, aortic knuckle, and this is the area, यहाँ पे दिखाया देखो इसने, this is the area of pulmonary, main pulmonary artery. जो हाइलम है, हाइलम जो है ना, that we'll discuss about. We will also discuss about हाइलम. हाइलम is the main area where so many vessels etc will come. So वहाँ से जो है pulmonary artery निकलता है. Okay, हाइलम. So this is aortic knuckle, और उसी का नीचे से निकल रहा है, देखो, aortic pulmonary artery, क्योंकि वो नीचे रहता है. Now this is the area of hilum, and this is the left atrial appendage, and this is the left atrium, left ventricle. Okay, this is cardiophrenic angle. You can see cardiophrenic angle. This is gastric bubble. I think now it is very clear. Okay, so this is posterior rib and this is anterior. Okay, now if you want more clear, now again we will have one more important picture over here. It is also indicating the same thing. Now yes, you just have a look into that, almost all same, but what is mainly mentioned is right atrium is very clearly seen here. See the area of right atrium. Okay, this is a cardiophrenic angle, and this is the right ventricle. अब तक हमें मिल ही नहीं रहा था ना right ventricle. राइट वेंट्रिकल यहाँ पे बीच में आएगा. जो कार्डियक शैडो है इसका यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट मिड लाइन पे आएगा वो. ओके, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट ventricle. This is left ventricle, this is left atrium. Okay, and this is para-aortic lines और paraspinal lines हम बताए थे उसको. Now aortic knob तो clear है यहाँ पे भी. सी very clear aortic knob. And pulmonary artery, aortic knob का नीचे हाइलम,
costophonic angle. Okay, now if you want, again one more picture is there, because I am making it very clear because this is the most important part. Now देखते ही तुरंत आपको जो समझ में आने वाला जो पोर्शन है वो क्या है. नंबर 1 इज SVC, सुपीरियर वेना केवा. देखते ही पता होना चाहिए यहाँ पे. और यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में इंफ्रा वेना केवा है. यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफ्रा वेना केवा. सो इंफ्रा वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों किस में ओपन होता है? राइट एट्रियम. तो उसका बीच में राइट एट्रियम है. ओके, दिस इज राइट एट्रियम. यहाँ से इंफ्रा वेना केवा आ गया, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा आ गया. सो हियर इज अ राइट एट्रियम. सिमिलरली दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज aortic notch. This is pulmonary artery, main pulmonary trunk or artery, and this is left atrial appendage and this is left ventricle. And this is the total shape of the cardiac. जो cardiac का जो shape है, cardiac जो notch हम बोलते हैं, so ये यहाँ से शुरू होता है. aortic notch से यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे आके left ventricle and here superior vena cava से शुरू होके like this. Okay. Now to understand the same in a better way, again you can picturize the heart over here. ठीक है. So this is superior vena cava coming over here, and this is right ventricle, right atrium, and this is the inferior vena cava which is joining there, so which is seen in the X-ray. ठीक है, हमने अभी तक जो पढ़ा. And this is the portion of a arch of a this is a portion of pulmonary trunk है. Okay, so this is pulmonary trunk, जो main pulmonary trunk जो इस तरीके से निकलता था, ये हो गया. ठीक है, वो यहाँ पे आ गया. और ये वाला पोर्शन जो हमें कर्व दिख रहा था ना, ये जो कर्व दिख रहा था, सो दैट इज दिस पोर्शन, दैट इज aortic knuckle. एग्जैक्टली सी वेयर इट इज जस्ट बिलो द क्लेविकल का जस्ट बिलो वो शुरू हो जाता है. ओके, एंड दिस इज पल्मोनरी ट्रंक उसका नीचे, एंड दिस इज एट्रियल, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो दिस इज राइट वेंट्रिकल. सो राइट वेंट्रिकल कहीं हमें साइड में तो मिलता ही नहीं है. तो ये वाला पोर्शन है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो ये शैडो में आ गया, बीच में आ गया. Okay, so this is, I think now there should not be any confusion. Now see other point, this is clavicle and all. Okay, now if you want one more picture, again we will have, I think by this time you know you are very very clear, there is no need of much more pictures. Now if you look into this portion, so this is about the spine. Now spine जो है बीच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू टेक द एक्सरे, स्पाइन जो है बीच में रहना चाहिए. सो वो कितना स्ट्रेट होना चाहिए वो देखना बहुत ज़रूरी है. सो T11 वर्टेब्रा, T10 वर्टेब्रा, ये सब दिखाई पड़ता है. ओके, सो ये सभी जो है आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. एंड दिस आर द रिब्स, यू कैन सी दिस इज द एंटीरियर रिब एंड दिस इज द पोस्टीरियर रिब. ये जो रिब्स है, ठीक है. सो इंटरकोस्टल स्पेस ये आ गया, इस ये दोनों के बीच में एक इंटरकोस्टल स्पेस है, ये दोनों के बीच में एक इंटरकोस्टल स्पेस है. सो इस तरीके से चलता है. दिस इज 1 2 3 4 5 6. ओके, सो इंटरकोस्टल स्पेस ये एक ऐसा नहीं है, ऐसे आता है. देखो ये एक इंटरकोस्टल स्पेस है, ये एक इंटरकोस्टल स्पेस है, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है. सो वी हैव टू कैलकुलेट लाइक दैट. ओके, नाउ counting the posterior rib, counting the anterior ribs. So rib counting में there should not be any mistakes in the rib counting. Now suppose ये जो है एक्सरे में जो दिखता है आपको, ओके, सो लाइक दिस. देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है. ओके, जो राउंड शेप है ना, दिस इज एक्चुअली स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रा. यहाँ पे इसका सामने क्लैविकल है, इसलिए वो ब्लैक कलर आ रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे क्लैविकल नहीं है, इसलिए ब्लैक कलर नहीं है. ठीक है, बिकॉज ट्रेकिया, यहाँ पे ट्रेकिया है, सॉरी नॉट क्लैविकल, ट्रेकिया है, इसकी वजह से जो है वो ब्लैक कलर आ रहा है. बिकॉज ट्रेकिया इज फिल्ड विद द एयर एंड वर्टेब्रा इज नॉट फिल्ड विद द एयर, सो देयर इज इट इज गिविंग अ वाइट कलर. ओके, दिस इज गिविंग द ब्लैक कलर. जहाँ पे ब्लैक कलर खत्म होगा वहाँ से वर्टेब्रा क्लियरली विजिबल हो गया. सो नाउ इफ यू लुक इनटू द वर्टेब्रास, सो ये जो दिस पर्टिकुलर ये जो पोरस पोर्शन यहाँ पे दिखता है छेद जैसा, this is actually considered as the spinous process of the vertebra. Spinous process of the vertebra. Now these are nothing but the vertebral bodies. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है vertebral bodies. Okay. Now this is clavicle. Very clear. This is the medial end of the clavicle. Okay. This is the medial end of the clavicle. Now the distance from the midline. Midline से जो है medial end of the clavicle का distance equidistance होना चाहिए. Okay. If these two distances are equal, then we will say there is no rotation.
अगर वो डिस्टेंस इक्वल नहीं है देन वी विल से इट इज़ अ रोटेशन. रोटेशन मतलब पेशेंट ने जो है एक्सरे निकालते वक्त एक साइड घुमा है, ठीक है, एक साइड उसने घूम लिया है. सो दिस इज अबाउट द क्लेविकल्स. आई थिंक नाउ काउंटिंग द एंटीरियर रिब्स. सी नाउ this is counting the posterior ribs. This is a posterior rib. Okay, this is 10th posterior rib यहाँ पे लिखा है. So posterior सामने आपको जो दिखता है एक्चुअली वो ऐसे आता है. Okay, so if you want few more pictures now here, now we will have a look on the cardiac shield. I think this is we have discussed many times. आपने दिखा है ये एक्सरे में. नाउ यू शुड एबल टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेरी क्लियरली. यस, टेल मी व्हाट इज दिस एरिया. आयोटिक नकल. यहाँ पे जो है पल्मोनरी आर्टरी है. दिस इज लेफ्ट एट्रियम है. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल है. और यहाँ पे आएगा आपका राइट वेंट्रिकल है. दिस इज व्हाट इज दिस. हाँ, सर कर्सर नहीं दिख रहा है स्पेस करने का. अच्छा, तो इस एक्सरे में आप देख रहे हो सब कुछ एरियाज. यस सर. सो दिस एरिया इज टोटली कॉल्ड एज कार्डियक शिलॉट है. अब ये नया वर्ड है आपके लिए, शिलॉट है. तो जो कार्डियक जो मैंने बताया था ये वाला पिक्चर में जो बताया था. ओके, यस, दिस इज, आई होप दिस इज विजिबल नाउ. दिस पिक्चर एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक शिलोट है. मतलब कार्डियक का जो का बॉर्डर को जो बनाता है पूरा दोनों साइड से, दैट एरिया इज कॉल्ड एज कार्डियक शिलोट. ओके, शिलोट है. नाउ you should know what is the normal cardiac shilote. I say this is how the normal cardiac shilote look like. Now when you see any disturbance in these borders, अगर आप एक्सरे में देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो बॉर्डर डिस्टर्बेंस है ये बहुत अंदर गया है, ठीक है, ये भी बहुत अंदर गया है, और या ये एकदम यहाँ पे वाइटिश आ गया, या ब्लैकिश जो है इस बॉर्डर से भी इधर भी आ गया. सो व्हाट इट सजेस्ट, नॉर्मल कार्डियक शिलोटे हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पैथोलॉजीज. So to understand that you should know the cardiac shilote. So this is normal shilote. ये जो shape है you should be very very familiar. Okay, this is normal cardiac shilote. And जैसा इस शिलोट में कोई भी डिस्टर्बेंस आया, कोई यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ. अब देखो ये बॉर्डर है. इफ़ यू सी दिस बॉर्डर इज़ वेरी रेगुलर. नो, कितना रेगुलर है ये बॉर्डर. अगर ये बॉर्डर कहीं इरेगुलर हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है, ठीक है. या ये बॉर्डर इधर आ गया थोड़ा तो उसका मतलब है कोई इधर पुश कर रहा है, या कुछ इधर आ गया इस साइड वाला इधर से पुश कर रहा है, या कुछ खींच रहा है. सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉर्मल कार्डियक शिलोटे यू शुड नो. नाउ ये जो है इतना रेगुलर रहता है, इसमें कोई ऐसा हचपच नहीं रहता है और डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, ब्रेक्स नहीं रहता है. इट्स अ कंटिन्यूस लाइक दिस. सो व्हेन दिस कार्डियक शिलोटे इज डिस्टर्ब देन यू हैव टू थिंक अबाउट सम ऑफ द पैथोलॉजीज. Now again the same picture. I think by this time now you are very very familiar, but if you want to see again you can see this. Okay, now some of the few extra things are here there. See, this portion is called as जहाँ पे sternoclavicular joint, second intercostal space है ना, second rib जहाँ पे जाके join होता है, second intercostal space. This is called as manubrium sterni or sternal angle. It's called as sternal angle. So where is the clavicle? This is clavicle. और यहाँ पे जो है आपका manubrium sterni है. Sorry, not clavicle. This is clavicle. This is first rib, second rib. यहाँ पे आ गया. Okay, second. Here there is a sternal angle. Okay. So now this is superior vena cava. Then again the right main bronchus comes. Atrium oblique fissure. If you want the fissures, lungs में fissure भी है. So if you understand the fissures, then this is very important. So this is one fissure over here, which is called as a horizontal fissure, which divides the lungs into two important branches. Now this is called as this fissure is called as oblique fissure. So this divides the this forms the middle lobe. इसकी वजह से जो middle lobe आता है. In the left side there is no oblique fissure, there is no middle lobe. In the left side we have got only one fissure. Okay, so this is the upper lobe and this is the lower lobe. This is the oblique fissure in the left side. But in the right side we have got horizontal fissure
as well as the oblique fissure. Okay, but in the left side only oblique fissure is there, we know that. And the left bronchus, left atrium, pulmonary trunk, everything is over. Okay, so now by this time trachea where actually divides, this picture shows where trachea actually divides, isn't it? See, just take 1 minute and read this slide and memorize whatever you have so far learned. See, first we are looking at the first rib. See, ribs are coming. This is the posterior portion, this is the anterior portion. First rib, then it is the second rib, it is the third rib, fourth rib, fifth rib, sixth rib. And this is the intercostal space. As you think, this is not the intercostal space. Okay, so this is intercostal space, oblique. Okay, then this is clavicle, yes, clear. And this is trachea. See how trachea comes, trachea is centrally placed, then it comes and divide. Okay, pulmonary artery, right margin of the right atrium, spines. I think everything is clear now. So yes, this we have already seen. If you want to look at the fissures in the right side, again this is the oblique fissure and this is the horizontal fissure. So this is upper lobe, this is mid lobe, and this is lower lobe. So we know that upper mid lobe is always wedge shaped structure. पहले जो oblique fissure है वो इसको upper और lower में divide करता है, but this particular horizontal fissure again divides into mid lobe. So mid lobe यहाँ पे बीच में कैसे हो गया? Oblique shape, sorry, wedge shape में बन गया. This is a wedge shape. This is upper lobe and this is lower lobe. Lower lobe is more posteriorly situated. Okay, lower lobe is more posteriorly situated. Again, if you see the left lung, there is only one fissure, that is oblique fissure. So that divides into upper lobe and lower lobe. Again, lower lobe present in the posterior side, more posteriorly present. Upper lobe more anteriorly present. And यहाँ पे जो mid lobe था, and the same area is now occupied by lingula. Lingula is the area where actually heart lies. Okay, so this is clear anatomy, simple anatomy. So this is all about the PA view reading in the medial aspects. Okay, superficially now we are knowing what are the different points that you have to consider when you are looking at the X-rays. Now in the next part we will see the understanding of lateral part of the lung, that is a lateral X-rays, lateral view. Now so far we have only seen the PA view. Now we have to understand when you look at the X-ray in the lateral view, what are the different things which are present.